government job. IAS, how does he become IAS? How does he become IRS, CBI officer or IPS or Navy officer or like that? There, some planets are different. So for IAS, the most important thing is exalted or powerful sun conjunct with Jupiter in 5 to 10 degrees. In the 10th house or elsewhere, doesn't matter. If it is there in the 10th house, then definitely yes, he will become. Elsewhere, he may not become this, he may get some other job. If Mercury, the 10th house, the Sun, Jupiter, and Mars are all are strong, the native can easily become an IAS officer. Basically, 10th house should be strong. 10th Lord should be strong means Mercury, if Sun, Mercury, Jupiter, and Mars all are strong, native will become an IAS officer. If ascendant sign is Aries, Sun, Jupiter, and Mars all are exalted, the native definitely becomes an IAS. For IRS, the distance Sun and Jupiter, distance between Sun and Jupiter is about 15 degrees or more than 10 degrees. Or it is Jupiter is behind Sun. If Jupiter is behind Sun, he will not become IAS. He will become IRS. Okay. And for CBI, Mars should be strong, along with Saturn and Rahu. For IPS, IAS, basically same thing, but Mars is also strong in case of IPS. And for Army also, Mars has to be strong. For Navy officer, powerful Mars, Sun in the 10th house, Sun, 10th house, and the Moon. Moon is extra important planet, which should be strong to become a Navy officer. And then IB, again Sun and Mars, along with Rahu. Security, defense, police, it is same Mars, security, defense, police. It is not very, you cannot exactly differentiate between police or defense or security. Merchant Navy also, majority of water planets are in watery sign, in 3, 6, 8, and 12 houses. Sun and Venus and Moon are strong. So let's see, consider one or two examples here. यहाँ देखिए, this person, Jupiter is here, Sun is here. Jupiter, but Jupiter is in 23 degrees and Sun is 9 degrees. Here again 15, 16 degrees difference is there. But Jupiter is, more importantly, Jupiter is the Lord of the 10th house. Jupiter is Lord of the 10th house. That's important here. And again, Mercury is there in the 10th house. Mercury also, if it is strong, similarly Saturn is also strong. Jupiter and Sun, they are close by, so he becomes an IAS officer. This is not a very good example of IAS officer, because most of the time we see Guru, Jupiter and Sun within 10 degrees. But sometimes, things still happen with some, still practically, it is not, you cannot force one yoga for everything. Otherwise, here in IPS, you can see Guru and Surya, Jupiter and Sun are together. Jupiter is 27 degrees, Sun is 25 degrees, so they are within 2 degrees
gap. Difference. Bilkul. Yes. And Mars is strong. See, it is the Kendra Lord in the Trikona. So Mars is strong. Here Mars is not that strong. Here also Mars is strong, but it is not as strong as in this horoscope. And IRS. Sun is aspecting Jupiter. Sun is at 3 degrees and Jupiter is 28 degrees. Jupiter is aspecting Sun. You consider this way. Jupiter is having 9th aspect over Sun. Can you understand this? Jupiter is at 28 degrees. It is on this border. Okay. ठीक है सर, ठीक है, वो मतलब 11th हाउस में चला जाएगा एक तरीके से. And Sun is in this border, at this border, 2 degrees. So it is border from here to this border. If you count, this becomes 9th house. Right. So Jupiter is having a direct aspect on Sun. And it is a very good aspect, just within 5 degrees. So, but another thing is, Sun is ahead. If I say that Sun is here at 3 degrees and Jupiter is here at 28 degrees, so Jupiter is behind, Sun is ahead. If Sun is ahead, just now I said that it does not give IS, it gives IRS. Sir, I have a doubt here. Actually, how to check the ahead and that I'm not getting actually. You are not getting it? Yes. Jupiter is here at 28 degrees. Correct, sir. The 9th aspect, if you consider 9th aspect, where is the 9th aspect? In this house? Yes, sir. Correct. 6th house. So in this house at 28 degrees is the aspect. Ji. So I'm considering Jupiter here at 28 degrees. Okay. Sun is sitting here itself. Ji. Okay. It is coming to 2 degree, 3 degree. So there is a gap of 5 degrees. Okay, sir. Okay. And another thing, that Jupiter is behind Sun. Yes. If Jupiter is behind Sun, then one does not become IS. Correct, sir. Or IPS. Same. Yes. In this horoscope, if you see, Sun is ahead. Ji. Jupiter is ahead of Sun. Ji. Jupiter is ahead of Sun. In this horoscope, it is not very clearly indicated, but in this horoscope, this is clearly indicated. Jupiter is ahead. Jupiter is behind. Jupiter is ahead of Sun. Jupiter is ahead of Sun. Okay. Now, in this horoscope, we see that Sun and Jupiter are separate. There is no aspect of Jupiter on Sun or Sun on Jupiter. Jupiter is 2 degrees, Sun is 25 degrees. No, they are together. Jupiter is 2 degrees and this is 25 degrees, 7 degrees gap is there. चलित में गुरु फिर सन के साथ ही जा रहा है. और जुपिटर भी जो है, this is also, it is also the 10th lord, and from here, from second house, it aspects the 10th house. So it's a good combination. He could have been a senior person, as he is a senior official. Otherwise, also he could have reached to IAS also. It is according to the rule, he could have been an IAS officer also, but he is probably enjoying all the facilities of a very senior official. So basically, Sun and Jupiter, they play a very important role
to become a senior person. You cannot, IAS, to become IAS or IPS or IRS, or to just be a senior official. There is a thin line gap, hairline gap. So it is difficult to differentiate that, but we can definitely say that Sun and Jupiter are together and both are strong. Then he will be a senior official or very important position he will hold. सर जैसे अगर दो IAS ऑफिसर हैं, लेट्स से वन इज अ वेरी ऑनेस्ट वन एंड द सेकंड इज अ करप्ट वन, तो दोनों में सन और जुपिटर वाला ये फॉर्मूला तो लगेगा ही कि कनेक्टेड हैं। करप्ट वाले में हम ये देखेंगे कि किसी का मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या नहीं सन या जुपिटर पे, तभी वो करप्ट होगा। करप्शन का तो ये है ना कि 8th हाउस थोड़ा खराब हुआ। 8th हाउस इंडिकेट्स करप्शन। 8th हाउस पे एप्लीकेशन देखना पड़ेगा ना सर? हाँ, we need to see bribe and all character और that way. लगन पे किसी के किसका असर है? लगन पे जो अगर शनि का, मंगल का, राहु का असर होगा, राहु का असर होगा तो खूब करप्ट होगा। अब जैसे इसी हॉरोस्कोप में ये these are 4 horoscopes, if we have to compare who is corrupt. So Ketu is here, Rahu is directly aspecting. जी। So and this person can be corrupt official. जी। And I know he has been caught. I know that. जी। Okay. Here Saturn is exalted. Lagnesh is exalted. So he will not be corrupt. Correct? जी। Here the Lagna contains moon. जी। There is no aspect, there is aspect of Rahu, 5th aspect of Rahu on the Lagna. Corrupt. But it is not, it is only an aspect, it is not sitting there. It is not sitting there. So it's तो not. मरकरी का भी एस्पेक्ट है, तो वो बेनिफिट हो गया थोड़ा। थोड़ा बहुत तो सभी होते हैं मेरे ख्याल से। और यहाँ पर भी चंद्र शनि का है ये, there is no Rahu involved, there is no malefic planet with the Lagna. The Lagna Lord, जो Mars is aspecting the Lagna Lord. Mars is aspecting the Lagna Lord. This flaw is there, so he will be slightly corrupt. But this is the highest corrupt person. Yes, yes. Towards that simultaneous look, Rahu is aspecting or Ketu is sitting there in the Lagna. This person is very much corrupt. जी। सर ये थर्ड केस में This is the least corrupt person. This is the least corrupt person. सर थर्ड केस में सन देख रहा है फर्स्ट हाउस को। सन का एस्पेक्ट हम मेलेफिक देखते हैं। हैं? सन का एस्पेक्ट हम मेलेफिक देखते हैं। यानी सन का aspect तो बेनिफिट मैलिफिक उस सेंस में नहीं होता, करप्शन के सेंस में तो मैलिफिक नहीं होता। करप्शन के लिए मैलिफिक नहीं होता। सन इज गिव्स, सन इज सात्विक ना सर बेसिकली। सन इज सात्विक, सो इट डज नॉट गिव यू अ बैड हैबिट, इट मे गिव यू एंगर बट इट विल नॉट गिव यू बैड हैबिट। ठीक है ना? आपको रोष आ सकता है, गर्मी आ सकती है आपको, लेकिन आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप गलत। सर किसी का 11th हाउस में राहु का प्रभाव रहेगा तो उसका करप्शन का चांस है? तो लग्न से कनेक्टेड होना चाहिए। करप्शन जो है ना लग्न से कनेक्टेड है, उसकी नेचर कैसी है। अभी जैसे लग्न में कई बार किसी का शनि बैठा होता है, जिसका किसी का नीच का शनि बैठा होता है जी, वो करप्ट रहेंगे, बहुत करप्ट होता है वो। नीच का जो शनि रहेगा, he will say something and do something else.
सर एक बात बोलनी थी सर, मेरे राहु फर्स्ट हाउस में, मैं बिल्कुल भी करप्ट नहीं हूँ, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ। अब वो किस साइन में है? टॉरस में है। टॉरस में क्या टॉरस अच्छा है ना, अच्छा है ना सर, टॉरस तो राहु के लिए। राहु इज एक्सॉल्टेड, यस, राहु इज एक्सॉल्टेड, उसको Yeah. थोड़ा देखना पड़ेगा ना आपको। और क्या। तो वो एक तरीके से पॉजिटिव राहु हो गया वो। जी हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत और बढ़िया। क्या। अभी हम टॉरस एंड जेमिनी दोनों अच्छा है ना सर? लिया ना, बिकॉज और सैटर्न, क्या सच। so we took it as a positive planet. Rahu can give you all the benefits like Jupiter. रियली? Yeah. Rahu, exalted Rahu can give good name fame. Okay, so let's. सर जैसे हमने अभी चेंज ऑफ जॉब के बारे में बात किया था, अगर हमें देखना हो कि बिजनेस में कोई नया ऑर्डर, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या समथिंग, तो भी हम यही सेम चीज एप्लीकेबल रखेंगे, 10th हाउस को ही देखेंगे, 10th हाउस को जुपिटर और सैटर्न को ही, है। जुपिटर और सैटर्न की ट्रांजिट्स को ही Yes. देखेंगे उस चीज के लिए भी। यस यस बिल्कुल, अच्छा ठीक है। आपको हर वक्त 10th हाउस पे ही देखना है ना, मूवमेंट 10th हाउस पे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन क्या हो रहा है 10th हाउस का। वो अच्छा ओके। 10th हाउस का एक्टिवेशन, प्रोफेशन किसी का कुछ हो सकता है, किसी का जॉब, किसी का बिजनेस, बट अफेक्ट तो वही करेगा ना उसके प्रोफेशन को। अच्छा ठीक है सर। सर 5 दिन हम लोग जो हेल्थ को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूल्स आर वेरी सिंपल, rules are the same, they will apply again and again and again. If you try and practice it, you will not have to remember the rules. You can, the rules are very less in number, but applicability you have to do for everything. Okay, क्या कह रहे थे? सर अगला दिन हम लोग जो हेल्थ के बारे में किया, रोग के बारे में किया, हाँ, एक बात तो समझ में आ गया, इस चीज से ये रोग होगा, यहाँ पर होने से ये तकलीफ आएगा, एकदम क्लियर है। आपने बहुत अच्छा तरीके से हम लोग को समझ दिया, हम लोग को। लेकिन ये हम लोग को नहीं पता है अभी तक, जो आदमी को रोग हुआ है, तो उसको जो निवारण होगा वो एक्चुअली होगा कि नहीं होगा, और कब होगा? कब होगा का तो अभी बताएंगे, अभी आपको, अभी हमने कब होगा बताया नहीं। सर आपने जैसे बताया, ऐसे आज एक चार्ट मिला मेरे को, हो सके तो एक बार देखने से बहुत बढ़िया रहेगा। एकदम आपने जैसे बताया ऐसे ही मिला, वो भी प्रेडिक्शन भी किया, वो भी मिल गया एकदम, आज पूरा 100% मिला। हाँ ठीक है, तो आप होगा तो डेट ऑफ बर्थ लीजिए तो। आगे लेंगे, अभी लेंगे, अभी आगे भी आएगा, अभी टाइम अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, हम अभी आगे जब पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि ये स्लाइड से मेरे को ये बताइए, कैन यू रीड योरसेल्फ दिस स्लाइड so that I can go to the next slide, next PPT in the next lecture, new topic, or should I continue with the, I have quite a few things left in this slide. Today I expected to do complete this. Now this was IAS, IPS, then how you get engineering technology, then how you become how do you get become a doctor, or you work as a medicine specialist. सर एक्चुअली ये भी करना ही चाहेंगे, इम्पोर्टेंट। Absolutely. Banking, CA, ये भी करना चाहिए सर। then journalism, then hospitality, then politics, then I have so many more things, acting line, sports, I have with examples everything here. बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, एक पूरा लेक्चर और लग जाएगा इसमें। चलो, doesn't matter, we'll give one more lecture to this profession.